Hello, guys. Welcome back to the Nifty City channel. First of all, wish everyone a very happy Republic Day. So, diving in today, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बहुत ही दर्दनाक एक्सपायरी थी, काफी मैसिव सेल ऑफ हुआ मार्केट में, where we were definitely caught on the wrong foot. Most of the times we are right, sometimes we are wrong. We have to accept that we also go wrong. So that is also important. एक self realization बहुत ही important है. Did not expect 18,000 to break. 18,000 broke. But ठीक है. Okay, so let's move on. अभी re-analyze करना पड़ेगा. So what I'm going to do today is Nifty, Bank Nifty, few important stocks भी हम discuss करेंगे. We will try to figure out the entire, what is the entire scene going on in Nifty and Bank Nifty. I am going to do this analysis with you guys. ठीक है, आपके साथ करने वाला हूँ, आपके साथ levels draw करने वाला हूँ. आपको दिख रहा होगा चार्ट पे कोई भी लेवल है नहीं. So we're going to discuss this from scratch. Now, what we have here is firstly we will discuss the weekly chart. ठीक है, weekly chart पे क्या है हमारे पास. Now on the weekly chart, what we are seeing is that हमने 21 EMA को weekly पे बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया हुआ है. ठीक है, जो लास्ट टाइम कल वेनेसडे को जो सेल ऑफ आया उसमें भी हमने बहुत अच्छे से 21 EMA को होल्ड ऑफ किया है. सो ऑब्वियसली 21 EMA जो ये वीक का बॉटम है as of now, this is going to be a very important level. This is 17,846. Okay, this is a very important level. Now, if I talk about the overall structure, what do we have in the overall structure? It's a uptrending market, clearly, right? तो इधर से हम गए, एक retracement आया, again we've gone up, एक retracement आया. Now, where can this retracement go to? Okay, so now if I draw Fibonacci simple retracement from the bottom right till the top, okay, this is a retracement. Now, ये जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, this is going to be the main do or die level, right? Now this is coming to 475 या roughly आप 17,500 पकड़ सकते हैं. दिस इज आर डू और डाई हाई वैल्यू लेवल. ठीक है, इधर हम जैसे बोलते हैं ना आंख बंद करके बाय कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 50 EMA ऑन वीकली चार्ट्स along with 38.2 रिट्रेसमेंट. राइट, अब यही रिट्रेसमेंट लेवल को मैं रीसेंट स्विंग के पास लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है कि हमने 50% रिट्रेसमेंट की एरिया में ऑलरेडी रिट्रेस कर चुके हैं. राइट, नाउ इफ वी डिप बिलो दिस तो वी विल बी क्लोज टू द 61.8% retracement also. So we can safely say that bounce can either happen from these levels or it can happen from this zone. ठीक है, ये दो जगहों से बाउंस होने की संभावना सबसे ज्यादा है. दिस इज द ब्रॉडर स्ट्रक्चर. तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर में वी हैव गॉट two broader levels, and if I want to mark, what I can do is I can mark the swing low, right? 17,761. तो basically 17,761 के नीचे close will trigger 17,500. This is a very big value zone which I believe this zone will not break. So that is the broader view. Now if we dive into a smaller time frame, daily पे देखते हैं क्या हो रहा है. अब daily पे क्या हो रहा है. Now daily पे we are in this range, right? ये हमारा एक रेंज है. तो ये रेंज का एक टॉप मार्क कर देता है. ओके, दिस द टॉप 18,265. बॉटम ऑफ द रेंज तो वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड. नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू. वी कैन आल्सो ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर, राइट? बट ट्रेंड लाइन का कुछ फायदा नहीं होगा अब. सो डेली पे हमको क्या दिख रहा है. डेली पे हियर वी हैड अ गुड ब्रेकआउट. देखिए, बट ये ब्रेकआउट वापस सस्टेन नहीं हुआ है. वापस वी हैड अ वेरी बैड फॉल. सो दिस वाज वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स कि ये ब्रेकआउट के बाद आई डिडंट एक्सपेक्ट निफ्टी टू अगेन गो बिलो 18,000. बट क्या कर सकते हैं, मार्केट इज सुप्रीम. 18,000 के नीचे वापस डिप किया है तो वी हैव टू एनालाइज अगेन. अभी आर्ली पे चढ़ता है. आर्ली पे क्या हो रहा है. नाउ आर्ली पे व्हाट वी कैन सी इज दैट ऑब्वियसली RSI is in oversold zone. That is point number one. Point number two, how do we trade now? Okay, so one important swing that we have to mark here is this 17,946. Okay, now this is hourly pay. This is the immediate trading zone. Okay, this box 846 का बॉटम, 946 का टॉप, 100 पॉइंट का रेंज है ये. इधर साइड ब्रेक हुआ, वी विल गेट गुड मोमेंटम.
नाउ ये इधर एक फिबोनाची ड्रॉ करता है. लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. नाउ यू कैन सी हियर दैट इफ आई मार्क दिस लेवल, ओके, ये मार्क कर लेते हैं एग्जैक्ट समवेयर अराउंड हियर, which is 18,023 के आसपास. Okay, so here what we are getting, or if I want to uh, make this more accurate, so I can draw this 18,018 के आसपास. Okay, ये एक important swing भी है, 50% retracement level भी है. Okay, so this is going to be crucial. Confirmation हमको कहाँ आएगा? 18,065 के ऊपर. ठीक है, कि दिस वाज अ कंप्लीट एक्सपायरी मूव. इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, सो डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव. तो ये दो लेवल्स हमारे पास आर्ली चार्ट पे आ गए. नाउ लेट्स गेट डाउन टू द 15 मिनट चार्ट एंड लेट्स सी व्हाट आवर ट्रेडिंग प्लान इज. ओके, नाउ व्हाट आवर ट्रेडिंग प्लान इज, नंबर वन पॉइंट, अगर वी ओपन इन दिस रेंज, ठीक है, इधर कहीं भी ओपन होता है एंड ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक अ ट्रेड. Okay, now on 15 minute you can see that clearly there is positive divergence. RSI strength was moving up, price was in a range, so that is positive for us. So but how do we play it out? We have to keep playing it according to levels. So first level will definitely be this 18,018, and for me the second important level will be this swing 18,078. राइट, तो ये दो स्विंग्स है. इसके ऊपर अगर निकले तो ये एक 18,200 का एक 184 to 200 ये एक रेंज है. दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस. ओके, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड देन फॉलोड बाय 265. सो दीज आर ऑल योर लेवल्स. ये आपको कंप्लीट वीक के लिए काम आएगा. ठीक है, इसके नीचे वी हैव 470 और जो प्राइस एक्शन बनेगा दैट्स डिफरेंट, बट यू कैन इजीली मार्क दीज लेवल्स एंड प्ले अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स. What is my personal bias? Personal bias is definitely that at least uh, for Friday and Monday, we may see little retracement, at least till here, somewhere around here. Okay, 18,018 हो सकता है, 78 हो सकता है, somewhere around these levels, plus minus 10 points, retracement we can see. Now, quickly moving on to Bank Nifty. Now, Bank Nifty में what do we have? Bank Nifty में, see what you can see here, we had very nice, this was the cup, this was the handle and breakout. Okay, तो ये लेवल के ऊपर हमका ब्रेकआउट मिल चुका है. अब ब्रेकआउट के बाद ये आया रीटेस्ट कर रहा है. अब ये पैटर्न फेल होगा कि क्या होगा, लेट्स सी. सो वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि इसने इधर जो, अगर हम 1 2 3 कैंडल सेटअप बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सेटअप इसने दिया था एट द हाईज. तो ये हाई broadly if we see, this high is going to be difficult to take out, but let's keep that aside. Let's see where our bases are forming. So now in this, if I talk about the levels, so obviously we can see that we have a very strong base here, that is 41,647 का जो base बना है अभी. This is on the weekly chart is a very important base. If I talk about Fibonacci, तो अगर मैं bottom से लेके top mark करूँ, so my go to level, जैसे 17,500 we had on Nifty, my go to level here is going to be this point. Okay, if I mark this, somewhere around 39,600 के आसपास. Okay, so you can say 39,500 odd round figure. This is going to be a very good, extremely value zone buying level, जो आग बंद करके buy कर सकते हैं. Right, so these are the two important levels on the weekly chart. Now let's get into the daily chart. Now daily पे what do we have? So daily पे again, this is the broad range that we have in daily. Okay, so we came here, took support at this level, went back, did a lot of time pass, gave a false breakout, and again we have come down. So here in this range, if I talk about the top level, okay, is going to be for me this. Let's just mark this level, 43,578. Okay, this is going to be the top level. So this is the range that we have, okay, which is roughly 2,000 points, 1,800 2,000 points के आसपास. Another important level that we have is this top, 43,078. Now let's get to the hourly charts.
नाउ आर्ली में एज यू कैन सी बहुत ही भयंकर सेल ऑफ था. हियर ऑल्सो आरएसआई इज इन ओवरसोल्ड जोन. ओके, जब जब ये ओवरसोल्ड जोन में गया है, अच्छा बाउंस बैक दिया है बैंक निफ्टी ने. So we are expecting the same from Bank Nifty again. Now on Bank Nifty, if we see, okay, this is the more or less the range in which Bank Nifty is trading on the 1 hour. Okay, this box. So it's important in my books for it to cross this level for any kind of upside movement. Okay, 42,000 के odd का level है ये. Now, what are the retracement targets here? So if I talk about this, why we're talking so much about retracement? Because we've had a very bad fall. So first step that we are not saying that completely the trend may reverse from here, but first step that we have is that it will retrace. Okay, so let's see till where it can retrace. So obviously we have 38.2% here, which is not looking like a, I would consider this level. Okay, that is, 1 sec. कौन सा swing पकड़े है? Let's catch the higher swing only. Okay. 42,500 cross होने के. I'll tell you why. So if you see here, we were struggling. Okay, this was the major resistance. इधर हमने टाइम स्पेंड किया, ऊपर गए, बट हम फेल हो गए. नाउ इट विल बी इंपॉर्टेंट दैट वी क्रॉस दिस लेवल. इसमें क्या होगा, ऑल द मूविंग एवरेजेस ऑल्सो वी विल रिक्लेम, एंड देन वी कैन सेफली से 61.8% के ऊपर रिट्रेस हो गया, देन वी कैन सेफली से कि इट इज लुकिंग लाइक अ complete reversal of the situation. So these are my two levels. Now let's get down to the 15-minute chart. 15 minute पे what do we have? So 15 मिनट में you can see this range के ऊपर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है. If 41,994 के ऊपर निकलता है तो एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होगा डेफिनेटली. अब लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होने के बाद वी विल हैव दिस स्विंग पॉइंट 42,238 के आसपास. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आप पकड़ सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली 42,515. Right, then we have the opening range here, 42,733, and then 43,078 is the entire top of this sell off. So these were the important levels in Bank Nifty. Now if we talk about important charts, so important is Reliance. Okay, now Reliance, if you see, let me on the daily chart. Okay, Reliance का daily chart अगर हम देखें, ये एक trend line था. तो here we had taken support here, here, here we had taken on the previous day, but again now minorly we have broken it. तो इधर प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. फॉर मी एट दीज RSI लेवल्स, रिलायंस इज लुकिंग लाइक अ अट्रैक्टिव बेट, राइट? क्योंकि जब जब अगर हम देखेंगे, यू कैन सी सेम ट्रेंड लाइन, रिलायंस इधर ओवरसोल्ड, वेरी गुड रैली. Same situation is happening here. So I am expecting at least it can give rally back to 2600. So Reliance is looking at a good position for some kind of retracement, pullback, or reversal. Second, we talk about HDFC Bank. Now, in HDFC Bank, if we see what has happened is everyone's very scared of HDFC Bank suddenly. Now, what has happened? इधर एक breakout fail हुआ, एक रेंज में अटका पड़ा था, एक ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ, एक नीचे ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके बाद एक कंफर्म ब्रेकआउट हमको मिल गया, उसका रीटेस्ट हुआ है. ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल था, उसका रीटेस्ट हुआ है. नाउ इफ आई ड्रॉ फिबोनाची फ्रॉम हियर, रीटेस्ट लेवल्स देख लीजिए, तो 31.8% रिट्रेस हुआ है अभी. कैन इट गो फर्दर डाउन? इट कैन गो 1631 तक भी जा सकता है. इधर 21 EMA का सपोर्ट भी है. मैक्स टू मैक्स इट कैन गो डाउन टू इज 1611, कि ये जो लेवल था 1611 टू 1614, इसके नीचे गया 50 EMA तोड़ता है तो देन डेफिनेटली दिस इज एन एग्जिट. सो करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 1648, राइट? 1613 और 1614 यू कैन से इज काइंड ऑफ योर स्टॉप लॉस. 30 काइंड्स. सो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज नॉट अ बिग डील इन इन्वेस्टिंग, इट्स फाइन. सो रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, दे आर एट गुड पोजिशंस. नाउ लेट्स जस्ट सी द स्टॉक्स दैट वी रेकमेंडेड. नाउ दिस इज अबॉट. सो ये एक अच्छी चीज थी जो हमने रेकमेंड की थी कि अबॉट बिलो दिस लेवल इज अ सेल ऑफ. तो ये एक सेल ऑफ आया है इधर, इमीडिएट ये लेवल का सपोर्ट लिया है. इसके नीचे वी हैव द टारगेट्स मार्क्ड. We are already short on this counter. You can see on the weekly chart also, it has broken the trend zone. It has broken everything basically. Right? Evening star formation है right at the tops. So this is looking weak about. बाकी TCS IT sector is looking good. IT is looking good.
रिलायंस एंड एच डी एफ सी में एक रिट्रेसमेंट ही मानूंगा मैं। ठीक है, अगर बाकी बैंक्स के भी चार्ट्स उठा के देख ले, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फेडरल बैंक हो गया, these all the charts have somehow retested their breakouts or they're consolidating. So I don't see major pain. हाँ, अगर we get some very negative news in the budget, then it's a different story. Otherwise, I would term Wednesday's fall as a pure monthly expiry game by the big players. I don't see that this is going to create a major dent. This may also be that the big players wanted to buy low before the budget, low prices where they wanted to buy, but we don't know. Let's see. So keep these levels in mind that we have discussed today. So this is how I analyze and I take out the levels. I share these levels with you guys. Baki, how you trade on these levels is completely risk management, psychology, position sizing, all that is in your hands. Right? Video अच्छा लगा तो please like the video, subscribe to the channel. Uh, all our Telegram groups का links are given in the description. You can go through them. You can join our premium groups. All the very best. Trade well. बाकी वीडियोस आती रहेगी. We will also meet before the budget. Take care, guys.